हैं, क्या कह रहे हैं वो. My first day, and so if I start playing my shots, from day one, from ball one, I don't think, it will be appropriate on my part. And as I mentioned, to a few others yesterday in Delhi, I would first, like to see, and I would like to, understand the various issues, discuss, with my officers, with the DGs, EDs, get into, the grips of all the various issues that RBI is supposed to be looking into, and then come back to you, wherever it is required. So this is primarily more, of an introduction. Some faces, of course, quite familiar, and some new to the media as well as, to your audience. And so let me, first of all say that it is indeed an honor to head this august, this prestigious institution. And more than an honor, it is a huge responsibility as well, as you are all aware, with the various tasks, functions that have been entrusted to this central bank, including the monetary policy, the foreign exchange reserves management, the currency control, the payment systems, spreading financial inclusion, banking regulation, growth of credit, ensuring liquidity, and so on and so forth. But RBI has, as I said, is an august, it's a prestigious institution, and it has a huge legacy. Some very commendable work, I think, RBI has done over the years, and it's all because of the hard work and the sheer diligence, the upholding, of the values of public service by the staff, by the senior management, and including, my predecessors, Mr. Shantikar Das, etc. And so I will continue to uphold the legacy and take it forward. I am aware that the RBI in its 90th year has given to itself the theme of stability, trust, and growth. All these three, I think, very, very apt pillars on which to work. So all these three broad themes that have been chosen, very, very pertinent. Ours is still an economy which needs to develop as we are entering in this Amrit Kal, and to realize the vision of the Viksit Bharat as in 2047, the huge responsibility that we have in ensuring that the growth that this country actually has, that continues, that is part of this theme, and that will continue. Stability in policy, again, very, very important, and this is something even in my previous role we try to give a stability, a continuity in policy. So whether it is taxation policy or fiscal policy or monetary policy, I think all businesses, all people, they do need this continuity and stability rather than a day-to-day kind of a policy. So we continue to uphold this value, this principle of stability. And again, trust. I can assure you that this institution, what it is basically because it has been able to earn the trust of the people, and so whatever decisions are taken, they will be taken with public interest in mind, so that the trust that the public has reposed in this institution, that not only continues but is
is strengthened. While stability, as I mentioned, is important, we are also aware that we are in a constantly evolving, constantly changing. This world is dynamic with geopolitical tensions, with the impact, of climate change and political uncertainty around the world. So, as with other organizations, where change, the only constant that it says, is change. And so we have to be conscious of this fact that while we do maintain continuity and stability, we cannot be stuck to it, and we have to be alert and agile to meet these challenges while we maintain a policy continuity. Secondly, I do believe that one of the most important roles of the central bank here is to spread financial inclusion with the banking sector, banking and the non-banking finance companies under its fold. Huge responsibilities for financial inclusion. We have, of course, traveled a lot with in financial inclusion, especially with regard to making available and accessible banks to the doorsteps of each and every nook and corner of the country. इसके अलावा एक ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर की ओर नजर डालते हैं। बजट में टूरिज्म पर फोकस बढ़ सकता है, सरकार नई टूरिज्म पॉलिसी लाने जा रही है। पूरी डिटेल्स के साथ अब मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास और पॉलिसी में क्या निकल कर आ सकता है? सरकार का टूरिज्म सेक्टर पर विशेष फोकस है। इसके जरिए सरकार की मंशा यह है कि ये डोमेस्टिक स्टेक होल्डर, विशेषकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देगी। जो फॉरेन मनी है उसका इनफ्लो बढ़ेगा और साथ ही साथ रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार को बड़े पैमाने पर सफलता हासिल होगी। और इसी को लेकर के सरकार, या यूं कहे कि टूरिज्म मंत्रालय बहुत जल्द अपनी नई टूरिज्म नीति को लेकर के सामने आने वाला है। और ये जो नई नीति होगी ये कई नए इनिशिएटिव्स पर आधारित होगी। मसलन टेंट सिटी पर विशेषकर फोकस रहेगा। टेंट सिटी ऐसा क्योंकि इसके पहले भी कई जगहों पर टेंट सिटी को स्थापित करके सरकार ने उसकी सफलता देखी है। अगर हाल की बात करें तो प्रयागराज में आगामी महाकुंभ से पहले जो टेंट सिटी बनाई गई है वो काफी प्रोत्साहित उसको किया जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स उसको काफी अच्छा मान रहे हैं और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। और ऐसे ही टेंट सिटी अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर डेवलप करने की मंशा सरकार की है और प्राइवेट प्लेयर्स में साथ देने को भी तैयार हैं। रण ऑफ कच्छ जो एक फेस्टिवल है गुजरात में, उसको एक बड़े उदाहरण के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कैसे वो पूरा फेस्टिवल इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देता है। तो उसकी जो बड़ी बातें हैं उसको भी टूरिज्म पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सीधे तौर पर निर्देश ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लेकिन ये दो पिलर्स पर आधारित होने चाहिए। पहला है कि इको फ्रेंडली टूरिज्म हो और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और उसका भी आप पूरा रिफ्लेक्शन टूरिज्म पॉलिसी में देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो लाइट एंड साउंड शो को अहम टूरिस्ट स्पॉट पे दिखाना ताकि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो टूरिस्ट को बताया जा सके। जो वाइल्ड लाइफ या नेचुरल पार्क है वहां पर जो टूरिज्म को प्रमोट करना है, इको फ्रेंडली टूरिज्म, वो भी इस नई नीति का एक अहम हिस्सा होगी। बता दें जहां तक रही बजटरी एलोकेशन की बात, तो संभवतः 1000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन इस नई नीति के तहत किया जा सकता है। हालांकि ये बजटरी एलोकेशन बढ़ाया भी जा सकता है। ये निर्भर करेगा कि राज्यों के पार्टिसिपेशन पे राज्य कितनी सहभागिता अपनी दिखाते हैं। और ये जो नई नीति है और टूरिज्म पे जो सरकार का फोकस है, ये आप आगामी बजट में भी इसका ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। बजटरी एलोकेशन का ऐलान होता हुआ देख सकते हैं कि सरकार बजट में टूरिज्म पर विशेष फोकस बना सकती है।